Next to this is regeneration. We will see regeneration. What is regeneration? Actually regeneration से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी इट विल बी प्रोड्यूस्ड. ओके, रीजनरेशन. जनरेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन, री का मतलब रिपीट. ठीक आहे. सो तुम्ही पाल पाहिली असेल, तिची शेपटी जर तुटून गेली तर काय होईल, नवीन शेपटी तयार होईल. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज रीजनरेशन. ओके, वी विल सी डायग्रामॅटिकली. सी हियर, दिस इज वन ऑर्गेनिज्म, दैट इज वन प्लानेरिया वर्म. ये वर्म है. ठीक है, वन प्लानेरिया. प्लानेरिया गेट्स कट इनटू 3 पीसेस, राइट. एक होता है ऊपर का फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन. ठीक है, फ्रॉम सिंगल पार्ट. सी, इससे रीजनरेट हो चुका है होल न्यूली ऑर्गेनिज्म, राइट. ये सेकेंड, फ्रॉम द सेकेंड पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म. फ्रॉम थर्ड पार्ट दिस इज द न्यू ऑर्गेनिज्म पार्ट, राइट. 3 प्लानेरिया वर्म्स प्रोड्यूस्ड. ठीक है, प्लानेरिया वर्म्स कट इनटू 3 पीसेस एंड फाइनली 3 प्लानेरिया वर्म्स प्रोड्यूस्ड. मतलब सिंगल कट से क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूली फॉर्म हो रहा है. दिस इज व्हाट इज नथिंग बट व्हाट, रीजनरेशन. ओके, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी. ये पूरा बॉडी एक एक पार्ट से बन रहा है. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन, राइट. रीजनरेशन होके सिंगल पार्ट से, फर्स्ट पार्ट से फुल बॉडी, सेकेंड पार्ट से फुल बॉडी, थर्ड पार्ट से फुल बॉडी बन रही है. नाउ आफ्टर रीजनरेशन वी विल सी बडिंग. ओके, बडिंग इज ऑल्सो अ मोड ऑफ asexual reproduction in living beings. What happens in the budding? New organism is formed from a small bud. Okay, diagrammatically we will see so that it will be clear to you all. Here this is a parent cell, this is a parent hydra. Okay, and these are the tentacles. त्याला सोंडे सारखे पार्ट असतात म्हणून त्याला टेंटॅकल्स म्हणतो आपण. ओके, दिस इज अ बड इज फॉर्म नाउ. ठीक है, स्मॉल bud is formed, small outgrowth is formed at the basal part. Here new hydra is formed. This is what hydra. Okay, from the bud new daughter cell is produced and after complete maturation new hydra it is separates or detached from the parent hydra. So new organisms is formed from the single parent, that is why it belongs to asexual mode of reproduction, right. What happens in the budding? A small part of the body of the parent organism grows out as a bud. Small part of the body of the parent organism grows out, which is called as bud, and which then detached and becomes new organism. Detach होके new organism form होता है. This is what is called as budding. Understood? So this is a asexual mode of reproduction shown by hydra. Okay, this is also budding now. In the previous case hydra का मैंने example दिया था and hydra was the example of multicellular organism. यहाँ पे ये जो yeast है, देखो yeast, right, parent yeast cell, ये yeast cell है and it is of unicellular organism. ठीक है, ये unicellular organism का एक छोटा bud form होता है. Bud is forming here at the top of this yeast and bud nipped off. मतलब कभी कभी ये दो है ना, यहाँ पे बड फॉर्म हो रहा है, ये पूरा टूट जाता है. न्यू ईस्ट सेल इज फॉर्म. समटाइम्स बर्ड्स रिमेन्स अटैच्ड. मतलब ये जो बर्ड है छोटे छोटे, उस बर्ड को दूसरा बर्ड आता है, दूसरा बर्ड, मतलब लॉन्ग चेन ऑफ ईस्ट सेल्स आर फॉर्म. सो इन दिस वे न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म. बट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, राइट. बडिंग इज अ asexual reproduction which is shown by unicellular organism, and the example of this budding is yeast. This is what yeast reproducing by the method of budding. ठीक है, हाइड्रा भी रिप्रोड्यूस होता है बडिंग से, बट हाइड्रा इज बिलोंग्स टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ईस्ट इज बिलोंग्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म.
Now after budding we will see about vegetative reproduction या vegetative propagation. Vegetative part का मतलब क्या होता है बच्चों? Vegetative part का मतलब होता है the part of organism especially in plants which can able to store the food materials, right? That part is called as vegetative part. Sometimes food material is stored in stem, right? Stem के अंदर होता है. इन केस ऑफ शुगर केन, राईट, ऊस माहिती आहे तुम्हाला, ऊसाच्या त्या स्टेममध्ये फूड मटेरियल असतं. कधी कधी तुम्हाला स्पिनॅच माहीत असेल किंवा फेन्युग्रीक मेथी माहीत असेल, तर मेथीच्या पानांमध्ये फूड मटेरियल असतं स्टोअर केलेलं. म्हणजे कधी कधी स्टेममध्ये, कधी कधी लिव्जमध्ये, कधी कधी रूट्समध्ये, कॅरेट्स तुम्हाला माहीत असतील. म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या पार्टमध्ये फूड मटेरियल स्टोअर करण्याची जी ॲबिलिटी आहे त्या प्रकारच्या ऑर्गॅनिझमला किंवा पार्टला आपण अवयवाला काय म्हणतो? व्हेजिटेटिव्ह पार्ट. क्लियर आहे? सो फ्रॉम द व्हेजिटेटिव्ह प्रोपेगेशन न्यू ऑर्गेनिज्म ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. फॉर एग्जाम्पल वी विल सी पोटैटो. पता है पोटैटो? ऐसा पोटैटो होता है, ठीक है. और स्मॉल स्मॉल डिप्रेशन्स आर देयर, दीज आर कॉल्ड एज आईज, त्याला आपण डोळे म्हणतो. अँड वेन वी टेक अ सेक्शन, सो फ्रॉम दिस अ न्यू ऑर्गॅनिझम इज प्रोड्यूस्ड. In this way, vegetative propagation is also a kind of asexual mode of reproduction. See here, this is a potato. ठीक है. Potato means what? It is a vegetative part. Old potato tuber planted in soil. Soil के अंदर लग दिया. ये देखो, these are the eyes. Small small depressions are there. छोटे छोटे खड्डे असतात त्या पोटॅटो वरती. इथे पण आहे बघा. Another new plant growing from this second bud. ये right. Right, यहाँ पे भी from these eyes new potato plant growing from this bud. Understood? But this is not budding, this is a vegetative propagation. From the vegetative part, अगर यहाँ पे एक कट लिया, यहाँ पे एक कट लिया, यहाँ पे भी एक कट लिया, तो from these eyes we get newly produced organism. That is why we said that this type of reproduction is vegetative propagation and it belongs to what? Asexual reproduction. Okay. And the last one of asexual mode of reproduction is spore formation. Okay. Spore का formation form हो जाता है and from the single spores again a new organism is produced. This is what? Spore formation. From the single parent new organisms are produced. We'll see diagrammatically so that it will be clear to you all. Okay, in the spore formation what happens? The parent plant produces 100 of microscopic reproductive units called as spores. यहाँ पे देखो, this is what a sporangium, right? ये क्या है? Sporangium है. इस sporangium के अंदर बहुत सारे spores होते हैं. When the spores cause of the plant burst, then the spores spread into air. ये देखो burst हो जाता है, तो burst होने से spread हो जाता है into air. When these airborne spores land on food or soil under favorable conditions like damp and warm conditions, they germinate and produce new plants, right? ये जब जहाँ पे भी कहीं पे भी गिर जाते हैं तो from that particle a new plant or new organism is developed, and this development या this reproduction it is due to the spores only. Okay, that is why this is called as spore formation, and in this spore formation spore is responsible for production of new organisms, reproduction of new organisms. That is why, and here only one parent is involved in this process. That is why it is called as asexual reproduction. So these are the various methods of asexual reproduction. So in short, asexual reproduction, it is of following types: fission, budding, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation, spore formation. इसमें से एक दो के ऊपर तो हम खास क्वेश्चन येऊ शकतात. So please be prepared with this. If you have any difficulties, then tell to your ma'am. She will send me messages regarding your queries and all, so that I will able to clear to you all. Okay, fine. ऑल द बेस्ट. रीड करो, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, ठीक है.